Hello, hi. Uh, start करते हैं. We'll start in about 2 minutes. Just give me a thumbs up or let me know if my voice is clear and मैं दिखाई दे रहा हूँ ढंग से. Just let me know that. Hello, hi Shita. Is the voice clear? दो चार मिनट में start. Okay, I think we can start now. Okay, I think we can start the session now. Cool. So the session is about full stack development in 2025. Basically, 2025 पे a fresher, someone starting his journey in software field or something, how can they become a full stack developer here? So basically, what is a full stack developer? uh, any idea? People in the comments, maybe you can tell what is a full stack developer, or full stack developer का रोल क्या होता है, क्या काम करते हैं वो, or something. I'll wait a second for some comments and I'll go ahead and explain that. वेब डेवलपमेंट नहीं, ठीक है, मतलब दैट्स फाइन. एनी अदर थॉट्स कि क्या होता है उसके अलावा? बैक एंड, फ्रंट एंड, यस. ओके, रीडिंग द कमेंट्स. गिव मी अ सेकंड, आई विल रिजॉल्व फ्रेंड्स. हाँ, राइट, राइट. सो बेसिकली क्या होता है फुल स्टैक डेवलपर? ही और शी वर्क्स ऑन द एंटायर एप्लीकेशन. बेसिकली फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, डेटाबेस हो, सिक्योरिटी हो. uh, वैसे तो पाइपलाइंस वाला पार्ट भी आता है उसमें, जैसे कि डिप्लॉय होता है, एवरीथिंग. But majorly the full stack engineer is who knows front end part as well as back end part. And front end, what does front end means and what does back end means? Front end is basically जो भी आपको UI दिखता है, यूजर को जो भी इंटरफेस दिखता है, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं ऑन मेनी एप्स. बेसिकली यूट्यूब पे हैं, लिंक्डइन पे हैं, अदर प्लेटफॉर्म पे लाइव हैं हम. तो ऑल द बटन्स यू कैन सी हेयर, you can see my face, my screen here, and you can see a comment section and multiple things. That is called front end. Okay, what is back end? Back end is basically how all this logic is being built. बेसिकली मेरा वीडियो आपको दिख रहा है, बट वो कैसे दिख रहा है, किस टेक्नोलॉजी से दिख रहा है? मैं अपने घर बैठ के अपने लैपटॉप पे वीडियो के सामने बैठा हूँ, बट वो आपको विजिबल हो रहा है, राइट? एंड जो आप कमेंट्स लिख रहे हो वो कहीं स्टोर हो रहे हैं, विजिबल टू मी. सो सारा लॉजिकल पार्ट है, दैट इज बैक एंड. यस, यस. HTML, CSS, JavaScript. या जो फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड पार्ट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ बेसिक. तो अगर हम वेब डेवलपमेंट बात करें, वेब डेवलपमेंट के लिए HTML, CSS, JavaScript इज द बिल्डिंग ब्लॉक. उसके बाद रिएक्ट, एंगुलर, नेक्स्ट.js एंड मल्टीपल पार्ट्स आते हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट ऐप डेवलपमेंट, उसमें आपका बेसिकली देयर आर मल्टीपल टेक्नोलॉजी है. नेटिव है, स्विफ्ट है, रिएक्ट नेटिव है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, मैं क्वेश्चंस 2 मिनट में लेता हूँ. ओके, फॉर द बैक एंड पार्ट,
बैकएंड इज व्हाट, बैकएंड इज बेसिकली कि जो लॉजिक्स बनते हैं, राइट, तो उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी यूज है? कैन एनीवन गिव एग्जांपल, बैकएंड में क्या क्या यूज करते हैं हम? राइट, तो बैकएंड में वी यूज जावा और नोड जेएस और सम अदर थिंग्स। ठीक है, जावा होती है, नोड जेएस होती है, एंड बेसिकली जावा का ही वी यूज स्प्रिंग बूट आल्सो, एंड देयर आर अदर लैंग्वेजेस पाइथन, गो एंड सो ऑन। दीज आर फॉर बैकएंड। Okay, तो if someone, yeah, that's correct, Node.js, Django, Spring Boot, and multiple options है। Okay, cool। तो यार अब the point here comes is कि how can someone be a full stack developer? Correct, correct। MongoDB भी है। MongoDB is a part of database that comes in backend only। Databases can be a type of SQL or NoSQL। SQL में हमारे पास MySQL, PostgreSQL आता है, एंड NoSQL में हमारे पास MongoDB and so on, so होता है DynamoDB, and we can use multiple other databases. So if you are a fresher in college, if you're in college or just out of college or maybe starting college or so, मतलब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ऑलरेडी, तो आपको कैसे अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, फुल स्टैक इंजीनियर, जिसको गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले। सो फॉर यू गाइस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग राइट नाउ is learning any particular development। सपोज आपको इंटरेस्ट है मोबाइल में, तो आप मोबाइल डेवलपमेंट सीख सकते हो। आपको इंटरेस्ट है वेब में, तो आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो। वेब में सजेस्ट बहुत लोगों को करता हूँ क्योंकि दैट्स द इजीएस्ट वन। जो किसी को अगर आइडिया नहीं है कुछ भी, क्या करूँ मैं क्या नहीं करूँ, तो दे कैन गो विद मर्न डेवलपमेंट। व्हाट इज मर्न स्टैक? एनीवन इन टेल इन चैट, मर्न स्टैक क्या है? समवन आस्क क्वेश्चन। मेरे को फुल स्टैक आता है बट मुझे समझ नहीं आ रहा है। इंटरव्यू जीएस बेस होगा, डीएससी भी करना पड़ेगा, टीएससी भी करना पड़ेगा इफ यू वांट टू गो टू अ गुड कंपनी। इफ यू आर टारगेटिंग अ गुड कंपनी यू हैव टू डू डीएससी एज वेल। उसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। मर्न मर्न स्टैक बेसिकली मोंगो, एक्सप्रेस, रिएक्ट एंड नोड, राइट। सो बेसिकली ये कंप्लीटली जावास्क्रिप्ट स्टैक होता है। सो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम फ्रंट एंड HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, देन यू मूव टू back end part, node and express, and you learn databases as well। तो वो मर्न स्टैक कहलाता है। मर्न स्टैक सबसे पॉपुलर एंड कॉमन क्यों है? बिकॉज इसमें ओपनिंग्स बहुत है इन स्टार्टअप्स एंड मल्टीपल कंपनीज। सेकेंड थिंग इज इट्स क्वाइट इजी। इट्स क्वाइट इजी एज इन मर्न स्टैक में सिर्फ जावास्क्रिप्ट सीखनी है आपको, एक लैंग्वेज। आप उससे फ्रंट एंड भी कर सकते हो, बैक एंड भी कर सकते हो। अगर आप जावा स्टैक या कोई और स्टैक यूज करोगे तो आपको बैक एंड के लिए जावा अलग सीखनी पड़ेगी, फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट अलग सीखनी होगी। इफ यू गो विद पाइथन आपको अलग अलग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई मर्न स्टैक सबसे इजी रहता है टू लर्न एंड स्टार्ट। ओनली रीजन इज कि जावास्क्रिप्ट से आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है। आई होप दैट पार्ट इज क्लियर। लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड ओके, आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, तो फुल स्टैक डेवलपमेंट इसको करनी है, दे हैव टू स्टार्ट विद डीएसए। ठीक है, डीएसए दे हैव टू स्टार्ट। बीएसए तो करना ही पड़ेगा आपको फॉर योर इंटरव्यूज। जो भी इंटरव्यू देगा उसके लिए करना पड़ता है। ये तो बेसिक है, मतलब डीएसए इज नथिंग बट आपका लॉजिक है। लॉजिक का टेस्ट होता है। अपने कॉलेज में आने के लिए पढ़ा था ना, जेई के लिए डिफरेंट थिंग्स आपने पढ़े थे। सपोज फिजिक्स के आप लॉजिकल क्वेश्चंस करते थे, मैथ्स के करते थे जेई टेस्ट के लिए। तो ये डीएसए इज द सिमिलर थिंग, जेई का इक्विवेलेंट है फॉर एंटरिंग गुड कंपनीज। तो ये तो बेसिक है, सबको आने चाहिए। इसकी तो हम बात नहीं करेंगे कि हम एक्सपेक्ट करें सबको आता ही है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज डेवलपमेंट। ठीक है, डेव। मैं टाइप कर लेता हूँ बाकी। हाँ, डेव पार्ट। ठीक है,
तो डेव में क्या क्या आएगा? MERN. We are going with MERN. Why we are going with MERN? So that लोगों को इजी रहे। तो समवन हु इज अ फ्रेशर एंड ही डजंट नो कि यार मैं क्या पढूं, कैसे पढूं। अगर कोई बच्चा है जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि यार मैं सेकंड ईयर में हूँ, थर्ड ईयर में हूँ, और आई एम पासिंग कॉलेज बट आई डोंट हैव एनी डेव एक्सपीरियंस, तो वो कहता है क्या करो, पढ़ो, सजेस्ट करो। तो आई सेड गो विद मन, बिकॉज सबसे इजी रहता है मन, राइट। सो इन 2025, एंड हाँ, कई लोग पूछ रहे हैं यार कि 2025 में इज मन रेलिवेंट और नॉट। तो दैट इज़ वेरी रेलिवेंट। ऐसा कुछ नहीं है कि मन रेलिवेंट नहीं है, बिकॉज इंडिया में आप देखोगे इन द रिसेंट कमिंग पास्ट ईयर्स एंड कमिंग ईयर्स ऑल्सो काफ़ी सारे स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, एंड बहुत सारे स्टार्टअप्स हायर भी कर रहे हैं। टेक स्टार्टअप्स का बहुत बूम चल रहा है इन इंडिया। तो उस केस में एंड मेनी स्टार्टअप्स ना दे स्टार्ट विद मर्न ओनली। व्हाई दे स्टार्ट विद मर्न? बिकॉज जो फाउंडर्स हैं उनको मर्न आती थी। मर्न ईजी है, क्विक लर्निंग है, क्विकली लर्न करते हैं, क्विकली डेवलप करते हैं, क्विकली अपनी ऐप या वेबसाइट लॉन्च कर देते हैं। दैट्स व्हाई दे स्टार्ट विद मर्न। दैट्स व्हाई मर्न इज क्वाइट ईजी फॉर समवन हु स्टार्ट्स अ करियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफी लोगों को आता है, ये शब्द ए आई। ठीक है, ए आई आता है, यार ए आई तो जॉब ले लेगा, ये पढ़ने का फायदा है कि नहीं? तो यार फ्यूचर में जो होना है, किसी को नहीं पता क्या हो सकता है, राइट। अभी के पॉइंट में ऐसा नहीं है कि एआई जॉब ले रहा है। अब ठीक है, अब जहाँ पहले 10 लोग काम करते थे वहाँ अब 7 लोग काम करेंगे एआई के साथ, एफिशिएंट है। एआई के साथ काम करो, आप एआई से डरो मत। बेसिकली इफ समवन, मैं अब रिप्लाई करता हूँ क्वेश्चन के, जाता हूँ मैं। अगर आप एक डिसेंट काम कर रहे हो तो अब आप एआई को साथ में यूज़ कर सकते हो। बेसिकली यू कैन यूज़ ऑनलाइन टूल्स, जीपीटी एंड को पायलट एंड मल्टीपल टूल्स, ताकि आप एफिशिएंटली काम करो ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि आपके काम को कम्प्लीटली एआई रिप्लेस कर देगा। ओके, सो ऐसा नहीं है कि एआई विल टेक जॉब इन द करंट सिनेरियो। हाँ, फ्यूचर में हु नोज, फ्यूचर में इफ इट विल टेक जॉब, वो सारी जॉब ले लेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेब डेवलपर या किसी की जॉब लेगा। हाँ, वेब डेवलपमेंट इज इम्पैक्टेड बाय एआई, समवन आस्क्ड। वह बेसिक डेवलपमेंट इम्पैक्टेड है। अब बहुत जो बेसिक साइट्स होती है ना, पहले बनती थी एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट से, या बेसिक रिएक्ट से बनती है साइट, those parts are impacted. But if we are a good MERN developer, we are full stack developer, so we have to take care of security as well, take care of complex logic as well. We have to take care कि कितना हमारा efficient है कोड, डेटाबेस में डेटा किस हिसाब से जा रहा है। तो वो सारी चीजें ना अभी AI is not able to do that in that depth. Okay, some people don't know Hindi very much, so I'll uh, yeah. So I'll try to speak in English. So what I'm saying basically is, if you are a good developer and if you are working on important technologies, and the important technologies as in, if you are working with complex logics, and if you are working with you know a vast system, then you shouldn't be afraid of AI. The only reason for that is because AI can do basic tasks very well, but when it comes to complex tasks, or when it comes to that are uh, the code base is huge. Basically, if we have thousands or tens of thousands of lines of code, maybe that's even less, lakhs of lines of code, then AI is not very efficient to manage that. So don't be afraid of AI as of now. Full stack development right now is a high paying job, right? You have to do DSA and development. Uh, just follow this path. If you like Android development, if you like Java, if you like Python, go with that. But if you are confused and if you're not sure what in which area I should move on, or if you don't know anything about technologies, I will say start with MERN, because it's the easiest. It has good number of openings. Many companies hire MERN developers right now, and they will keep hiring them. So yeah, I think this is our basic roadmap. Uh, In-depth roadmap तो क्या रहेगा? That will be basically, if you want in-depth roadmap for MERN stack, you have to start with HTML, then move to CSS and JavaScript. These things are very basic. No one will hire you if you know only HTML, CSS, JavaScript. But these are the building blocks. You have to know these things, right? And after that,
After that, go with React, learn React in depth, then move to Node.js, learn databases. After doing that, you can learn Next.js as well. Post that, instead of using JavaScript, use TypeScript. Okay, that's great. और किसी को any other doubts, any other? आई एम स्पीकिंग इंग्लिश बोल रहा हूँ, बेसिकली इंग्लिश हिंदी मिक्सर है, बीच बीच में दोनों बोल रहा हूँ मैं, सो दैट बोथ ऑफ द ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड, दोनों समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक है। व्हाट टू पोस्ट ऑन लिंक्डइन, व्हाट टू पोस्ट ऑन लिंक्डइन। सी, लिंक्डइन पे पोस्टिंग इज इम्पोर्टेंट ताकि आपका नेटवर्क बढ़े। इफ योर नेटवर्क विल बी, इफ यू विल हैव अ गुड नेटवर्क, आपके काफ़ी अच्छी कंपनीज में कनेक्शन होंगे, नेटवर्क होंगे, तो रेफरेंस एंड सॉरी रेफरल के लिए इट विल बी इजी, right? So what to post, basically if you're in college and if you're learning something, just post everything, something new, like I'm learning this today, I have learned this today. For example, if you have learned an interesting topic, आपने अगर नोड में कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक पढ़ा है, तो जस्ट कमेंट एंड लाइक पोस्ट ऑन लिंक्डइन की यार मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी है, आई एम शेयरिंग माई नॉलेज विद यू गाइज, डू लेट मी योर थॉट्स। if you're fresher or in college, you can do this. अगर आप जॉब में हो, then you already are doing some complex tasks, you can talk about those, talk about latest trends like AI या फिर डेवलपमेंट में कुछ आप बात कर सकते हो, these things only. Cool. uh yes, someone asked, I am new in web development, can I learn, just give me a second. Yeah, yeah, someone said I'm new in web development, can I understand MERN? Definitely, MERN, तो it's, MERN is very basic. MERN is for basic only, जिसको uh, कुछ नहीं आता, बेसिकली जो जीरो से स्टार्ट करते हैं, दे कैन इजीली लर्न MERN, बिकॉज इसका कर्व बहुत इजी है, लर्निंग कर्व इज वेरी स्मॉल। ओके, गॉट इट। आई थिंक वी कैन गो टू क्वेश्चंस नाउ, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? एआई वाला बता दिया मैंने कि एआई इज नॉट टेकिंग द जॉब राइट नाउ, थोड़ा इम्पैक्टेड है, डेफिनेटली इट्स इम्पैक्टेड, बट it is not taking the job completely. If you are smart enough doing complex tasks, then don't worry about AI. Okay. The question is, I'm confused between front end, after front end Python, ML, जैसे और मोहन is better. ठीक है। शुभ रातो, राइट। तो योर क्वेश्चन इज कि, हिज क्वेश्चन इज कि आफ्टर लर्निंग फ्रंट एंड क्या करना चाहिए, व्हाट वी शुड डू, वी शुड डू पाइथन और पाइथन एंड ML with DSA or MERN. So Subrato, totally depends on your college, on your मतलब आपको क्या पसंद है। सपोज आप बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो इन AI and ML, आपको बहुत पसंद है, जस्ट गो विद इट। बट आई थिंक आपका क्वेश्चन है तो यू आर कंफ्यूज। सो सेकेंड पार्ट इज, व्हाट इज योर कॉलेज। अगर आपकी कॉलेज की इफ यू आर इन कॉलेज, इफ यू आर इन कॉलेज एंड प्लेसमेंट आपकी कॉलेज की बहुत अच्छी है, AI ML वाली कंपनी आपकी कॉलेज में आती है, यू कैन लर्न AI ML, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेज में नहीं आती। एंड ऑफ कैंपस भी most of the companies don't hire ML engineers as fresher ML engineers की job market is very tough compared to MERN. So if you're not from a very good college और आप ऑलरेडी पाइथन या ML फील्ड में काम बेसिक नहीं कर रहे हो, आई वुड से गो विद MERN। ठीक है, हाँ, अगर आपको बहुत ही मन है ML का, यू कैन डू दैट, बट MERN करो इफ यूर इन कॉलेज, इट विल बी बेटर। आपके रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स आएंगे अच्छे अच्छे, आप बैकएंड में नोड डेवलपर की पोजीशन पे जा सकते हो, यू विल नो डेटाबेसेस, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो अच्छे। आई वुड से गो विथ मोर। ठीक है। हाउ कैन यू लर्न AI एंड वेब डेव टुगेदर। यार एक दो महीने दो मोहन पे अच्छे से, तो एक बार आप वो हो जाए, यू कैन स्टार्ट विद AI की बहुत सारी लाइब्रेरीज एंड टूल्स नोड पे है, यू कैन इंटीग्रेट दोज इन योर ऐप एंड मेक इट बेटर। ओके, ओके, एनी अदर क्वेश्चन? मेरे को फुल स्टैक आता है नेक्स्ट ईयर, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा कि बेस इंटरव्यू होगा।
डीएसए भी करना होगा, डीएसए भी करना होगा। अ, दोनों करना होता है बेसिकली। इफ यू आर गोइंग टू अ वेरी गुड कंपनी और गुड कंपनी, डीएसए राउंड होंगे आपके एक दो हमेशा। इफ यू आर वर्किंग, इफ यू आर टारगेटिंग वेरी बेसिक कंपनी, तो खाली डेवलपमेंट कर लो, वहाँ डीएसए वगैरह नहीं पूछते। ठीक है, बट इफ सिंस यू आर ऑनलाइन एंड आप इंटरेस्टेड हो चीज़ों में, यू आर कमिंग टू सेशंस, आई थिंक यू विल वांट टू टारगेट गुड कंपनीज, तो डीएसए करो भाई, डीएसए करना पड़ेगा। समवन इज सेइंग डिप्लोमा थर्ड ईयर, आई विल डू बीटेक। हाँ ठीक है, ये पूछना है इसने। ठीक है, कूल कूल। तो आप कह रहे हो कि 2029 में ग्रेजुएट करोगे, व्हाट ब्रांच? या ब्रांच में एआईएमएल चूज कर लो, नो इश्यूज। ठीक है, आप आईटी करोगे एआईएमएल करोगे, 80% ऑफ द सिलेबस विल बी सेम। 80% सिलेबस आपका वही रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो डजेंट मैटर, ब्रांच मैटर नहीं होगी। कॉलेज ऐसे ही एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करके ब्रांच बढ़ाते रहते हैं। 80% ऑफ द सिलेबस सेम रहता है। आपको जो मिल रही है चूज करो। इफ़ यू हैव ऑप्शन चूज फॉर एआईएमएल, आपको आइडिया भी लग जाएगा कि आपका कितना इंटरेस्ट है उसमें। उस बेस पे आप अपने डिसीजन दे पाओगे। करियर ऑफ कैन लर्न बेसिक एडवांस web development. If you want to learn basic to advanced web development, you can like we are starting a course as well in July end, I guess. July end we are starting a course on coding blocks only for web development from absolute basic to advanced part. It will cover MERN stack and all. I'll be teaching there. You can check that out, and yeah, you can check that out as well. Uh, Also, there are abundant of resources online. You can, if you don't want to do that, you can learn it yourself also. So there is no particular place. What I'm thinking is, will I learn full stack until I start? Yeah, Subrato, that's right. Up till you start the BTech, learn that, learn full stack, and after that, instead of doing freelancing, focus more on internships. Internship experience will be counted. Freelancing will not be counted that much. Yes, it is a paid course. You can get the details on Coding Blocks website, or you can ask on Coding Blocks chat as well. They can give you better details. Okay, okay, cool. Any other questions? Okay, let's wait for a couple of minutes. There are, else we will be going ahead. Ah, yes, July end. Uh, July around 28th it will be started, and 3 days a week, 3 hours per day. ऐसे होगा. We'll be teaching that. Learn from the basic HTML, CSS, JavaScript, then one stack. We'll do basic system design also and projects also. DSA. Subrato, you can start DSA just before college or with college as well. बहुत लंबा नहीं होता DSA part. You can start the first second year as well. Uh, if if you are doing Python, then you can do in Python. If you want to do in JavaScript, you can do in JavaScript as well, because it will be easier for MERN and TSA to be same language. But if you can manage two languages, अगर आप दो लैंग्वेज मैनेज कर पाओगे, आप जावा या सी प्लस प्लस में यूज कर लो, whichever you think is easier for you for DS. Okay, anything else? Yes, beginner friendly yoga course. That cool. ठीक है. If there are no doubts, I think we can conclude the session. Okay, no more doubts. हम कर देते हैं. And अगर आपको doubts हो, you can reach out to me on LinkedIn as well. Nirbhay Luthra. That's my name there.
ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय। अच्छा क्वेश्चन आ गया, फटाफट से तो खत्म कर जाते हैं क्वेश्चन ये। कर लो DSA, जॉब से कर लो DSA, नो इश्यूज। Why do you want to go and do an internship in Big Four or Deloitte if you want to be a software engineer? Software engineer है तो those shouldn't be your dream companies. वो कंसल्टेंसी के लिए कंपनी है, ठीक है। ग्रेट ग्रेट। यार जावा बैकएंड इफ यू वांट टू डू, जावा बैकएंड अगर करना है आपको, तो बेसिकली स्टार्ट विद बेसिक जावा, बिल्कुल बेसिक जावा पढ़ो, and post that move to learn Spring, basic Spring, and Spring Boot for a while. Move to these things. But if you are a fresher in college, do full stack, only backend मत रहो, ठीक है। ठीक है यार, ओके, ओके एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय।